फूल के लब पर मेरा लहू रख दे, ज़बां मुझसे चटाने तराशने वाले निगार और नक्श में आसाइश नमूद रख दे। हमारे जो आज के नेक्स्ट स्पीकर हैं, नो डाउट वो फैमिली लॉ में बहुत माहिर है, फैमिली जज हैं यहाँ पर फैमिली कोर्ट में। उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग थे जो पहले ऑलरेडी इसी कोर्ट में, तो वो इन्होंने डिसाइड किए हैं। तो मैं जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर था वो था ओवरव्यू इन फैमिली लॉज। तो इनमें और इस टॉपिक पर जो है जो लेक्चर देने के लिए मैं नेक्स्ट जो स्पीकर है जनाब अहमद खान चट्ठा सीनियर सिविल जज साहब को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी जो मालूमात है, जितना इनके पास नॉलेज है, उनमें से कुछ जो चंद कतरे हैं वो हमारे इन यंग जो वकीलान पर निछावर करते हैं। जनाब Rahim, respected members of the bar, Assalamu alaikum. Our today topic is overview of family laws. First of all, we look into the past, into the history, how the family laws were framed, what were the requirements, what were the circumstances under which this very special law was enacted. If we look into the history past, in the early 50s, a sizable segment of the society, particularly the women sector, had mental reservation regarding the treatment being meted out by the male-dominated society. So at that time, the All Pakistan Women's Association, who claimed to represent the women point of view, started agitation and asked the then government to make legislation to protect the rights of the women. So the then government, upon that demand agitation, constituted a commission to look into the demands of the women regarding the legislation and make recommendations. So upon recommendation of the commission, the then government made enactments in the shape of Muslim Family Laws Ordinance 1961, that was subsequently followed by the Muslim Family Court Act, West Pakistan Family Court Act 1964. Subsequently, rules was made of Muslim Family Court Rules 1965. All these enactments, the provisions aim at expeditious settlement and resolution of the disputes relating to the family, marriage, family affairs, and the matters connected therewith. First time in the history, under the Family Court Ordinance 1961, Section 4 was enacted, and the orphan children were given the inheritance rights in the property left by their grandfather. Section 4 is there, and the Section 5 of that very ordinance make the registration of marriage compulsory, and the violation has also penal consequences. हमारा ये overview है. You should keep in mind that we have to, due to the short of time, हम उसके outlines में जाएंगे. And then section 6, which speaks about the announcements of talaq, and section 8, talaq otherwise, dissolution of marriage otherwise by talaq, where the woman is delegated the power rights to dissolve the marriage. So section 7 speaks about the procedure, also speaks about the procedure when one wants to divorce his wife, then he has to make notice to the chairman of the council, and also he has to deliver a copy of that very notice to the wife, and then the chairman constitutes an arbitration council who tries to
make conciliation between the parties, and if it's then affecting the certificate of divorce is granted, and after the period of 3 months, that divorce become effective. And then comes section 9, which speaks about the maintenance of the wife. And now, by way of amendment in 2015, a child has also been entitled to the maintenance now, and that provision speaks about the power of the chairman, where wife or child applies for maintenance loans against the husband or father, then they make an order for maintenance of the wife as well as child. Then we come to the section 10, which speaks about the mode of payment of dower. Where no mode of payment of dower is mentioned in the Nikalama, then it is considered to be payable on demand, the whole payable on demand. Then we come in almost family code ordinance. We have completed the family code ordinance. Now we come to the Family Codes Act 1964, which is special enactment and speaks about the establishment of the family courts as well as the qualification of judges, as section 3 and 4 speaks about the establishment of the family court as well as qualification of judge. A judge may be a district judge, an additional judge, or a civil judge. Then we come to the section 6, sitting of the family court. The very important and pivotal importance is the section 7, which speaks about the institution of the suit. So first of all, I think we can discuss the family court, the matters over which the family court have jurisdiction. The family court have jurisdiction to entertain, hear, and adjudicate upon the matters specified in part 1 of the schedule. That may be matters relating to the dowry articles, maintenance of the wife and child, as well as the guardian matters, custody matters, visitation rights of the parents to meet them, matters relating to justification of marriages, matters relating to the personal property and belongings of a wife and child living with mother, and any other matters arising out of the Nikalama. The family court has exclusive jurisdiction. Now we come to the section 7, institution of the suit. A suit before the family court shall be initiated with the presentation of plaint or in any other such manner as the court prescribes. Here we also look into the Family Court Rules 1965, section Rule 4. Rule 4 tells us about the form of the plaint, that tells us about the prerequisites of the plaint. The plaint shall be in writing, shall be signed and verified by the plaintiff. This is Rule 4. And it will be filed by the plaintiff, or through counsel, or where the plaintiff is a female, then by an agent. Then we can look further. The plaint shall bear all material facts relating to the dispute. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. जो न्यू एंट्री अगर बैठे हुए हैं, वैसे मुझे तो लग रहा है सारे कोई जो 2-3 से कोई न्यू एंट्री है, न्यू जो लोग हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो लेक्चर है उनके लिए कि हमने बताना प्लेट है क्या उसके साथ लग रहा है. आप लोग तो मेरे ख्याल वेल अवेयर हैं काफ़ी इवन, तो उसमें प्लेट होनी कैसी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हम रूल्स में जाएंगे. The plaint under sub rule 1 shall also contain the following particular. क्या है कि name of the court in which the suit is brought and the facts
showing that it has jurisdiction. Then the name and description and place of residence of the plaintiff. The name, description, place of residence of the defendant so far as can be ascertained. When the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect. The facts constituting the cause of action and the place where and date when it arose, and the nature of the claim and valuation of the claim with particulars in brief and the relief claimed. Then there is a proviso to section 7 of the Family Court Acts. Here, by way of amendment, some proviso have been added regarding the Fiqh Jafri. You can read that. The man, provided that where the parties belong to Fiqh Jafriya, the man may voluntarily and with his free will pronounce himself or through duly authorized attorney Vakil, talaq, uttering in literal Arabic words siga, in the physical presence of at least two witnesses qualifying the requirements of section Article 17 of the Qanun Shahadat. The pronouncement of talaq shall be ineffective if it is done jokingly or under anger, intoxication, insanity, duress, coercion of any kind, and from any corner whatsoever. In case of dispute with reference to clause A or B arising due to differences of opinion, the parties or any of the parties may have recourse to a court of competent jurisdiction by approaching the Mujtahid Alam or decision of and the decision of Mujtahid Alam shall have a status of an award, and that award shall be dealt with by the Arbitration Act as required under the provision. Then the explanation Mujtahid Alam or Fiqh Azam means a jurist consult religious scholars or doctor of Shia school of thought well versed with Sharia, having international repute and of such recognition. The Council of Islamic Ideology shall maintain a panel of Mujtahid Alam having a aforesaid qualification. Then है जी इसके particular जो प्लेट के साथ हैं, when you file a suit in the family court, a schedule giving number of witnesses intended to be produced in support of the plaintiff, it's a mandatory. और prerequisites हैं जो हमने कंप्लाइंस करनी है, जो हम वैसे फील्ड में क्योंकि हम शेयर करते हैं कि देखा है कि आप बाद में एप्लीकेशन मूव कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है. फैमिली कोर्ट एक्चुअली इंटेंडेड एम इज द एक्सपीडिएट डिस्पोजल एंड सेटलमेंट. बात हम देखते हैं कि वो जो आपकी मिसलिनियस एप्लीकेशन आती है देन वो डिले का सबब बनती है. ये हमने जो न्यू एंट्री है और जो हम सबको ये देखना है कि हम जो पहले प्री रेक्विजिट्स उस वक्त पूरे करें. जो आपने विटनेसेस पेश करने हैं उसका शेड्यूल है विटनेसेस जरूर. देन उसका नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस, ब्रीफ समरी और प्रिसाइज ऑफ द फैक्ट्स दैट द विटनेसेस विल डिपोज. ये भी जो कि हम नहीं देते, इसमें हमने ये देखना है. Then are all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property, belongings of wife, custody of children, registration right parent to meet their children. तो ये all claims एक वन सूट में आप कर सकते हैं, सेपरेट सूट की जरूरत नहीं है. Then provision 2 है, in case a party wants to produce a witness before the court who has not been mentioned in the plaint, or otherwise the party may do so at later stage provided with the court's permission. Second, only if the court considers such evidence expedient in the interest of justice, and the court will grant
permission only on sufficient grounds. Then section 7(3), subsection 3(1), the party where the party needs to produce a document in the court when the plaint is presented, then it will deliver the document or a copy of such document before the court along with the plaint. वो डॉक्यूमेंट जो आप मेंशन कर रहे हैं कि आपके पोजेशन में है, उसको आप मेंशन करेंगे वहाँ प्लेट में, उसकी कॉपी लगाएंगे ओरिजिनल और उसकी कॉपी. And then 7(3)(2), where reliance is made on a document which is not in the possession of the plaintiff, the document must be entered in a list to be appended to the plaint along with reasons of its relevancy, along with the reasons of its relevancy. उसमें थोड़ा लुक इन करना, जो हम कैजुअल वे में लेते हैं, देखते हैं, हम उसको कोई डॉक्यूमेंट मेंशन कर देते हैं, बहुत दफ़ा हम स्पेसिफाई नहीं करते, बाद में हम देख रहे होते हैं जब लिस्ट ऑफ रिलायंस हम कैसे निकालें जी, दिखाएं जी, वहाँ वो जनरली लिखा होता है. ये हमने देखना है कि हम क्योंकि जिस प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं हम सब, हमें उसकी कंप्लाइंस में, क्योंकि ये आपके क्लाइंट्स के राइट्स होते हैं, आप जिसके राइट्स को वाच करने आ रहे हैं, जो क्लेम करने आ रहे हैं, उसके प्री रेक्विजिट्स पहले पूरे करें, आपके क्लाइंट से पूरे करें. तो आप एक आपकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, और आपके क्लाइंट से पूरे करें, ये पहले पूरे करें. बाकी जनरल ना लिखे, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लिखे एंड आल्सो मेंशन द रेलेवेंस. देन है जी, देन आ जाता है several copies of these documents should accompany the plaint for the purpose of service upon the defendant. डिफेंडेंट्स की नंबर के मुताबिक आप उसकी कॉपी और शेड्यूल ऑफ विटनेस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर कॉपीज शैल बी sent to the defendant with the summons, notice, etc. Now we come to the section 8. Section 8 speaks about the intimation to the defendant. Intimation to the defendant. हमारे जो पंजाब अमेंडमेंट आई है उसमें है जी, when a plaint is presented to a family court, it shall fix a date which shall not be more than 15 days for the appearance of the defendant, and within 2 days of the presentation of the plaint, sent a notice or summons of the suit to a defendant through process serving agency of the family court, through registered post acknowledgement due electronically or through courier, etc. And further, that should be supported by a copy of the plaint, copy of the schedule, as mentioned in subsection 2 of section 7, and subsection 3 and section 7 regarding the list of the documents. Then the court direct that the notice or summons issued under clause B also be served through affixation, as well as shall simultaneously issue a proclamation in a newspaper. ये सारा हमने simultaneous process जारी करना है to the defendant. Then when we will issue that very summon notice, then we will require in that very notice from the defendant that when he will appear on the date fixed, he will submit the written statement. Then comes the section section 9. It speaks about the written statement. On the date fixed, ये पंजाब अमेंडमेंट में पढ़ रहा हूँ. On the date fixed under section 8, the defendant shall appear before the family court and file the written statement, a list of witnesses, gist of evidence, and in case the written statement is not filed on that day, the family court may, for any sufficient reasons which prevented the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the written statement and other documents on the next date which shall not exceed 15 days.
Then subsection 1A has been added. A defendant husband, जो हमने पहले किया था कि एक क्लेम में हम सारे क्लेम ले सकते हैं. A defendant husband may, when where no earlier suit for restitution of conjugal rights is pending, claim for restitution of conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage. In the same way, where the suit is for restitution of conjugal rights, the wife may claim the dissolution of marriage. And then proviso है that the proviso to subsection 4 of section 10 shall apply where the decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of law at the stage of reconciliation when we pass the decree. And subsection 2, where a defendant relies upon a document in his possession or power, he shall, same है जो plaint वाला process है वही written statement है. When he relies upon document and state that he is in possession of that very document, he will produce either the document or copy thereof. And in the same way, if he is not in possession and claims the possession in some other person or subsequently want to produce, he will mention that the documents in the list of documents and also mention reasons for the relevancy of that very document. Then subsection 5 is very important. If the defendant fails to appear on the date fixed by the family court for his appearance, then if it is proved that the summons or notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte, provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms as the family court directs, be heard in answer to that very suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. If it is not proved that the defendant was duly served as provided in subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summons and notices to the defendant as the case may be in compliance of the clauses B, C of subsection 1 of section 8. Then rule subsection 6. In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply for setting aside ex parte within 30 days of the service of notice under subsection 1 of the passing of the decree. If we also look into the rules, the rule 12 subsection 2 speaks rule 30 speaks about the ex parte decree or proceeding may for sufficient cause shown be set aside by the court on application made it within 30 days of the passing of the decree. Rule 30 इसको regulate करेगा family court act. Rule 30. Then if the decree is passed, ex parte passed, then we will send the copy of that very judgment decree to the defendant and also to the concerned union council, etc. Then comes the section 10. Still we are at the stage of pre-trial stage. Section 10 speaks about pre-trial proceedings. When the written statement is filed, the court shall fix an early date for a pre-trial hearing of the case.
On the date so fixed, the court shall examine the plain, the written statement, if any, and the precise of evidence, and the documents filed by the parties, and shall also, if it so deems fit, hear the parties and their counsel. Then, by way of amendment, subsection 3 and 4 has been added by Punjab Muslim Family Courts Amendment Act 2015. The Family Court may, at the pre-trial stage, ascertain the precise points of controversy between the parties and attempt to effect compromise between the parties. Subsection 4, subject to subsection 5, if compromise is not possible between the parties, the family court may, if necessary, frame precise points of controversy and record evidence of the parties. And subsection 5, in a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage, and in case of dissolution of marriage through Kula, may direct the wife to surrender up to 50% of the deferred dowry or 25% of the prompt dowry, admitted prompt dowry to the husband. Then subsection 6, subject to subsection 5, the decree for dissolution of marriage, the family court shall direct the husband to pay whole or part of the outstanding deferred dowry to the wife. Now we come to the section 11. Section 11 tells us about the recording of evidence. On the date fixed, subsection 1, on the date fixed for the recording of evidence, the family court shall examine the witnesses produced by the parties in such order as it deems fit. And one lay has been added by way of amendment. The family court shall record or cause to be recorded the substance of the statement of a witness, or may record or cause to be recorded the statement of witness through audio or video recording. All these amendments have been made only for the purpose for expeditious disposal of the family source, family matters. Then subsection 2, the court shall not issue any summons for the appearance of any witness unless within 3 days of the framing of issue, any party intimates the court that it desires a witness to be summoned through the court. I will repeat, it's very important subsection. We very at a later stage sometimes apply for the summoning of the witness when your almost number of witnesses has been recorded, and you apply for the other one to be summoned through the court. So here this is subsection very important. The court shall not issue any summons for the appearance of any witness unless within 3 days of the framing of issue you apply for that very witness in summons court. ये हमने इसकी कंप्लाइंस में करना है, क्योंकि हमारे डिले का सबब जो हमारे प्रिस्क्राइब पीरियड में हमने डिसाइड नहीं कर पाते, ये सारी बातें बहुत सारी हैं जो आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, देन उसका रिप्लाई हम लेते हैं, देन उसको डिसाइड करते हैं, एक मत वो टाइम. Then subsection 3, the witnesses shall give their evidence in their own words, provided that the parties or their counsel may further examine, cross-examine or re-examine the witnesses. Provided further that the family court may forbid any question which it regards as indecent, scandalous or frivolous, or which appears to it to be intended to insult or annoy or needlessly offensive in form. ऐसे क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकेंगे. अभी ये क्वेश्चन हुआ भी था कि यस ये पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते. Unless until someone's character is in question, you can't ask such type of question, and the court can stop you. Then subsection 3A, the family court may, if it so deems fit, put any question to any witness for the purpose of illustration of any point which it consider material in the court. कोर्ट को भी देख सकती है, फिर कोर्ट समझती है कि कोई ऐसी क्लैरिफिकेशन या जरूरत है, कोर्ट कैन आस्क द क्वेश्चन. Then subsection 4, the family court may permit the evidence of any witness to be given by means of an affidavit. और अगर एफिडेविट आप सबमिट करते हैं, देन उसको कोर्ट में आके उसको एंडोर्स जरूर करना है. एफिडेविट ओनली सिंपल एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस. यस यू कैन submit the affidavit in evidence, but the witness has to appear before the court and endorse that very affidavit in evidence that he has submitted the same.
there is proviso that if the court deems fit, it may call such witness for the purpose of examination in accordance with subsection 3. वही आ गए जी हमारे पास। थोड़ा सा हम रूल देख सकते हैं कि ये हम ज़्यादा देखते नहीं क्योंकि हम फैमिली कोर्ट एक्ट की हद तक रहते हैं। अगर रूल देखें तो उसमें हमें क्या बताया हुआ है एविडेंस के मतलब। अच्छा सॉरी, एक रूल 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, फैमिली पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट रूल्स 1965 रूल 10। इट स्पीक्स दैट कोर्ट में where it deems fit direct that whole or any part of the proceeding under the act be held in camera. In camera means that in the chambers of the judge. It's a Latin word. In private capacity where the only the parties have access and the media as well as the public have no access, that proceedings are called proceedings in camera. And sub rule 2, the parties can also ask the proceeding to be held in camera. Both the parties. When both the parties to the suit request the court to hold the proceedings in camera, the court shall do so. When both the parties request, then the court is under duty bound to hold that proceedings in camera, according to the peculiar circumstances of that very case. Then we come to the section 10A. It speaks about the recording of evidence rule. First of all, we have gone through the section 11, recording of evidence, and rule tells us how the evidence is recorded, in what language. We have the evidence of each witness shall be taken down in writing in the language of the court by the presiding officer of the court or in his presence and hearing and under his personal direction and superintendence, and shall be signed by the presiding officer of the court. Sub rule 2, when the evidence of a witness is given in English, the presiding officer of the court may take it in the language of the court, etc. Then we have sub rule 3, when the evidence of a witness is given in any other language, not being English or the language of the court, then it will be translated into the language of the court. And the sub rule 3, in cases in which the evidence is not taken down in writing by the presiding officer of the court, he shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of the substance of what such witness deposes, and such memorandum shall be written and signed by the presiding officer of the court with his own hand and shall form part of the record. Rule 5, sub rule 5, as the evidence of each witness taken down is completed, it shall be read over to him and shall, if necessary, be corrected. And the sub rule 6 here puts some embargo upon the sub rule 5. If the witness denies the correctness of any part of the evidence when the same is read over to him, the presiding officer of the court may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objections made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary. वो ड्यूटी बाउंड नहीं है जहाँ एक एविडेंस दे दी रेड ओवर, यस रेड ओवर कर दिया, अगर वो कहता है ये नहीं है या दोस्त नहीं है तो the court can make a memorandum and note down the objections of the witness, then we'll decide the case. Sub rule 7, if the evidence is taken down in a language different from that in which it has been given and the witness does not understand, then it will be translated into the language which the that very witness understands. And the sub rule 8, when the court has recorded the evidence of a witness, it's very important sub rule. When the court has recorded the evidence of witness, it shall also record such remarks, if necessary, as it thinks material, respecting the demeanor of such witness whilst under examination. Then we विटनेस की सालगिरह हो तो वो भी डिमिनर में आएगा या क्या होता है? just see. इतना सब क्या सवाल है आपका? अच्छा चलिए, तो मैं सुनो नहीं, मैं तो मैसेज कर रहा हूँ। सर एक वकील साहब का फोन है, वो कहते हैं फौरी मुझे एक ना
ये सवाल करें ना अगर गवाह की सालगिरह है तो क्या अच्छा कोर्ट में मनाया चले इंशाल्लाह आप देखते हैं थोड़ा सा हम इसको सर ये देखो ना सर, जज बड़ा दिल करे तो कोर्ट में मनानी चाहिए। मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर जो जजेस होते हैं वो तो जो होते हैं मदई के बच्चों को अपनी कुर्सी में बिठा देते हैं, मदई को चेयर में बिठा देते हैं। हाँ भी बताएं बिठाया जा सकता है, बिठाया जा सकता है, इसमें कोई अगर माने नहीं हम मेंटेनेंस अलाउंस में बच्चों को मैं बच्चों को बुला बड़ा दिल करना चाहिए, अल्लाह रुतबा बड़ा देता है तो दिल भी बड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में। आपको इशू नहीं है, बच्चों को बुलाना कोई इशू नहीं है, आप मेंटेनेंस में है, कोई जहाँ फैमिली आ रही होती हैं, बच्चों की कस्टडी का मैटर है, आप बच्चों को बुला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अमेरिका में भी यहीं भी हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा ना नहीं आपकी बात का गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी आगे आ गया हमारा जी सेक्शन है 12, ये सेक्शन 11, अच्छा सेक्शन 11 हो गया। और उधर हमने सेक्शन रूल 10A पढ़ लिया जी, इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। Then section 12 conclusion of trial. After the close of evidence of both sides, the family court shall make another effort to effect of compromise or reconciliation between the parties within a period not exceeding 15 days post trial reconciliation. If such compromise conciliation is not possible, the family court shall announce its judgment and give a decree. ये हमारा ट्रायल जी पोस्ट ट्रायल ये मुकम्मल हुआ। सेक्शन 12A speaks about the prescribed period within which a suit is to be decided, that is 6 months from the date of its institution. Then section 30 speaks about the enforcement of decrees, which shall be enforced by the court which passed it, or it may be sent to some civil judge for its execution, as mentioned in section 30. And then if some payment of money is made in response to the satisfaction of decree, that will be so mentioned in the relevant register. And if it is not paid money, that will be recovered as arrear of land revenue. And the family court may also order in the decree to pay the decreed amount in installments. Then section 40 speaks about appeals, that is to be decided in 4 months. And where a dower has been decreed not exceeding rupees 5,000 each minor, then no appeal will lie. And where the dowry article not exceeding 1 lakh, no appeal will lie. Then we comes to the section 15 of Family Court Act. It speaks about power of family court to summon a witness. पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। और इसकी अगर फैमिली कोर्ट किसी को समन करती है और नहीं पेश होता तो उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है, दैट हैज बीन मेंशन्ड। अ सेंटेंस him to a fine not exceeding 1,000 rupees. Then section 16 speaks about the contempt of the court. And now the very important section 17A, fixation of interim maintenance loan. At any stage of proceedings in a suit for maintenance, the family court may pass an interim order for maintenance. Section 17A. ये पुराना है, वो it's not up to date. Section 17A. In a suit for maintenance loan, the family court shall, on the date of first appearance of the defendant, fix interim monthly maintenance loans for wife or a child. For wife, repeated, for a wife or a child. अब तो पहले वो ये चल रहा था ना कि बच्चों पे करना है, वाइफ का भी कर सकते हैं आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, कुछ दिन पहले रिस्पेक्टेड जैसा विकास शाह साहब की कोर्ट में
मैटर आया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अगर मेंटेनेंस क्लेम करते हैं अपने बेटे से तो वो फैमिली कोड एक्ट में तो मेंशन नहीं है, तो उन्होंने ये सूट फाइल किया है, तो हम उसको किस एम्बिट में लेंगे? 370 है ना कोर्ट नहीं काम All the matter, family matter will come within the jurisdiction of family. इसे क्लियर हो गया? उस दिन मैंने ये क्वेश्चन था। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे। अच्छा, will fix monthly maintenance loans for wife or child, and if the defendant fails to pay the maintenance loan by 14 day of each month, the defense of the defendant shall stand struck off. Penal consequences है जी, उसका defense shall stand struck off, and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of evidence in the plaint and other supporting documents on record of the case. In a decree for maintenance loan, the family court may fix an amount of maintenance higher than the amount paid for in the plaint due to a flux of time or any other relevant circumstances. ये जो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लेम किया तो उसी पे कोर्ट में रहना। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उसको उससे ज़्यादा उसका राइट बनता है मेंटेनेंस अमाउंट और द डिफेंडेंट कैन पे, कोर्ट उससे ज़्यादा जो क्लेम की उससे ज़्यादा भी कर सकती है। फ्लक्स ऑफ टाइम, अगर इतना टाइम गुजर गया है और जैसे हम देखते हैं महंगाई है या ये चीज़ें सारी, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दैट फैक्ट्स कोर्ट कैन एनहांस। जी जैसे सर कोर्ट मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स कर देती है, अगर वो ज्यादा है उस बंदे की इस्तेताक से ज्यादा है, तो वो अगर उसको चाहता है कि इसको कम करवाएं या इसको ज्यादा करवाएं, देन हम फैमिली कोर्ट के तहत किस हमारे पास नहीं, अगर तो वो समझता है कि ये उसको ज़्यादा कर दे तो वो तो देन तो अपील है, अगर वो उसकी लिमिट से ऊपर है अपील है, अगर नहीं है तो वो रिट में चले जाते हैं। अपील है अगर वो हाँ देन आप जा सकते हैं, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन रिट फॉर्म हाई में तो प्रोवाइडेड अब तो जजमेंट आई है कि कर सकते हैं, अपील भी दायर कर सकते हैं। तो टीएलटी 2019 जो है उस पर दिए गई है 916 सफाई वाला कि आप एंटायर बिलोंग्स के अगेंस्ट अगर है तो आप अपील भी दायर कर सकते हैं। चल वो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि मेंटेनेंस अलाउंस ज्यादा कोर्ट में फिक्स करके ये काम है। मसलन एक बंदे के 15 बच्चे 5,000 हर एक लगा दिए, बंदा काम करता है पेट्रोल पंप पे, नहीं पे कर सकता। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंटरनल मेंटेनेंस देखने के लिए रिव्यू की फाइल की जाती है। यस रिव्यू है, आप रिव्यू कॉल कर सकती है, रिव्यू रिकॉल में आ सकते हैं। द कोर्ट कैन अडॉप्ट द प्रोसीजर, ये फैमिली कोर्ट का है, उसमें रिव्यू में आ सकता है। कोर्ट देखती है कि इसमें है ऐसा चीज़। 15 बच्चे वैसे होते भी उसी के हैं जो हमारे पास आते हैं 16 अमीर बंदा के पैरेंट्स आप भी कोई हिम्मत करना तो मेरे वाले केस में है सर एग्जाम के पास बंदे ने 12 बच्चे ने वो हमारे लिए मुश्किल बड़ा हो जाता है। फिर मेंटेनेंस नॉन को इंटरनल पे हम सोचने लग जाते हैं कितना करें, वो बड़ा मुश्किल होता है वैसे। चले जी, अपने घर में आया हम मेहमान देन जी सब पीछे शुरू कर लो। सब सेशन 2 सब नोट भी then it speaks about the annual increase. The court can mention the annual increase in the maintenance loans fixed by the court. If there is no any mention of increase, then it will automatically increase at the rate of 10% as under the law. Sub rule 3 and the sub rule 4 is very important sub rule. For the purpose of fixing the maintenance, the family court may summon the relevant documentary evidence from any organization, body or authority to determine the state and social of the welfare. ये बड़ा important है। बहुत दफ़ा आप देख लेते हैं किसी का बैंक में है या अदर ऑर्गेनाइजेशन में, that very lady have no access to that regard, then आप as a legal secretary आपको पता होना चाहिए, then you can move an application for summoning of that regard. You can look into that very application. Section 17B speaks about the issuance of commission. The
family court also issue commission if required in some case. 18 speaks appearance by agents. Then court fees of rupees 15 upon the family. Sir, 18 is about the Pardhanisheen lady. Whether the defendant, who is the male person, can appear on the behalf of through the power of attorney. Yes, there Because are. that specific. Yeah, it's but by way of judgments. It has been. Specifically, that has not been mentioned in the. Yes, yes. But many judgments have been delivered by the apex court. Yes, That he can. yes. मतलब सऊदी अरब में है ठीक है। वो स्पेशल अटॉर्नी ने उसको ड्रेस वो भी पर्दानशीन की तरह है सर ये बच्चे बैठे हैं ना तो ये समझे कि ये पर्दानशीन लेडी के बारे में और डिफेंडेंट के बारे में कोई नहीं है, वो जैसे भी है वो सऊदी अरब से पूछ करके लाजमी है। नहीं वो हो सकता है, आप तो नंबर ऑफ केस तो बहुत सारी डेवलपमेंट होगी ना। पहले जो इसमें जजमेंट आई थी वो मैंने डिस्कस इस पॉइंट पे भी जब आप एक स्पेशल लॉ है पावर ऑफ अटॉर्नी है कि उसके तहत इख्तियार दिया जा सकता है, तो फिर इधर क्यों करेगा? उसमें फर्स्ट टाइम जजमेंट आई थी कि भी आप जब एक लॉ उसको जो है रिकॉग्नाइज करता है फिर आप वो अटॉर्नी। Then we have section 21A. It's also very important section. Interim order pending suit. The family court may pass an interim order to preserve and protect any property in dispute in a suit and any other property of a party to the suit, the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the decree if and when passed. तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है या आप देखते हैं कि ये डिफेंडेंट या वो उसे सेल करना चाह रहा है टू डिप्राइव द plaintiff, then you can apply under this provision. On this very provision, there is a judgment PLD 2017 Lahore, PLD 2017 Lahore 689 page. Mr. Justice Jawad Hassan. सर इसी पॉइंट पे एक सवाल आ गया कि दावा चल रहा है, वो जो डॉगर में जो प्रॉपर्टी उसको दी गई है वो चाहती है कि उसको ये क्लियर है कि अब ये बंदा उसको सेल कर देगा, क्योंकि सूट डिसाइड होने में काफी टाइम लगेगा, तो साथ ही वो फिर उसके साथ में हम लोग एक एप्लीकेशन दे देते हैं स्टेटस को के लिए कि टिल द डिसीजन ऑफ द सूट इस प्रॉपर्टी को स्टे कर दिया जाए ताकि ये फर्दर किसी को एलिनेट ना कर सके, इसको सेल ना कर सके। सेक्शन 21 का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, वो जो मैं जजमेंट दी है ना उसमें काफ़ी उन्होंने डेकोरेट किया है। अगर उसकी होल्स ऑफ प्रॉपर्टी वही आप देखते हैं तो मेंशन है दैट इज इन द निकाहनामा, the court can reserve that property in the scene of that correction. सेक्शन 21 ए जो है ना वो इससे बढ़ के है, जैसे स्टे होता है ना हम सिविल सूट में, It's just like supplemental proceedings in the CPC 94. It's just like 38 ऑर्डर 38 को इन्वोक किया जा सकता है यहाँ पे कर देते हैं हम। but नहीं वो the family court is barred to apply the बस somewhere सर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आर्टिकल कानून शहादत only the principles which may helpful in the expeditious disposal of the family matter we can adopt either in the family CPC or in the community shahada. Otherwise only section 3. But when we look into the section 21A, it's just like a 38 when we were asking about. But there is a but there is a specific provision in this very law. You can apply that very provision. पर दूसरा का सवाल ये है कि वो समाज की इजमाई जो है कि शिफ्ट ना कर ले उसके घर वाले सूत्र साथ और नहीं वो एक कमरे से दूसरे कमरे में, वो हाँ। कहते हैं कि सेक्शन 21 वाले मैडम बताएं ये कैसे बनता है। अच्छा जी हम जो आप आगे अच्छा चलेंगे क्योंकि उस कमरे से वही सामान उसके समला पे आए। मैंने ये वैसे सही जैसा भी बता सकते हैं मेरे पास एक केस आया कि जी हमारे साथ वाले कमरे में बैठ के मेरी सास और नंदे मेरे खिलाफ बातें करती हैं तो स्टे दिया गया, तो हमने उसको एंटरटेन किया। दूसरा सवाल का जवाब देंगे। पहले वाले तो परेशान हो इसकी खैर तो मेरी खैर कोई नहीं। अगर आपने ज्यादा सवाल पूछे तो हमने लेक्चर शुरू से फिर शुरू अच्छा चलेंगे आगे हम फिर
25A speaks about the transfer of cases as well as the execution also. Then तो बच्चे कह रहे हैं छुट्टी का टाइम हो छुट्टी है कैसे हड़ताल हो रही चलेंगे अभी आप थोड़ा सा जो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है जो उसका रेलिवेंट बस ये है कि मतलब थोड़ा सा रह गया उसके बाद the Dissolution of Marriage Act 1939 regarding the source of dissolution of marriage and grounds have been mentioned in section 2. You can read that. अच्छा ग्राउंड से मैं सारी बात काट रहा हूँ मैं आपकी तरह ना नया नया वकील बना तो एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए कहने लगे कोई अच्छा सा ग्राउंड तो बताओ मैं उसको 7 साल ग्राउंड में ले वो बेचारा केस का ग्राउंड पूछ रहा था ये एक मैं पढ़ूंगा जी ये ज़रूरी है कि क्योंकि लेटेस्ट ये हम लोगों को ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ हम इस पर फोकस नहीं करते ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ये बहुत ज़रूरी है आप लोग क्योंकि आपके पास आते हैं आप लोग फर्स्ट में इनका होते हैं जो देखते हैं मेरा ख्याल है कि हम इसमें हम आपको एज ए सोसाइटी इसमें देखना चाहिए जहाँ आप देखते हैं कैसे कि मैरिज है जो चाइल्ड कोई बच्चे को दिया जा रहा है तो उसमें आप लोग एजुकेट कर सकते हैं अपने बाल फोरम पे कोई कमेटी भी बना सकते हैं लुक इनटू दैट मैटर इन योर सोसाइटी तो उसके कुछ फिर आगे उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर वेयर द bridegroom is above 18 years of age and he marries a child then there is a penal consequences which may extend to which may extend to majority act के against नहीं है सर but majority act पे तो it's a legislation it still stands and we have to comply with that हेल्पफुल हो सकती है जैसे सर आजकल 376 और में या 365 के अक्सर ऐसे आते हैं कि वो बिलो द एज होते हैं 14 ਅਸੀਂ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਹੈ ਜੀ जी तालब से है सर 376 में या 365 बी के आजकल बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें बच्ची जो है वो बिलो एज होती है उसकी बेब फॉर्म में या बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी एज होती है 14 इयर्स या 15 इयर्स होती है वहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल तो है लेकिन इसका प्रोसेस बहुत मुश्किल है चलिए वो तो फिर अगर ये ऐसी बात है क्योंकि सर इसकी जो कंप्लेंट है वो आप थ्रू द चेयरमैन और उसके यूनियन काउंसिल engage the chairman who will file the same लेबर हो तो नहीं कर सकते चलिए इसमें 5 साल हो गए माइट भी अगर ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं तो इसमें मजीद तरह के अमेंडमेंट्स भी आती हैं इसी जैसे कंप्लेंट प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी एक जजमेंट रिसेंट आ गई है कि बिलो द 18 इयर्स अगर वो कोई करेगा कोई खातून या बच्ची करेगी तो वो ब्लड इनवाइट कराती है इस्लामाबाद की रिसेंट 2022 की तो वो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जी लेकिन सर इमाम अबू हनीफा का व्यू जो है रहमतुल्लाह अलैह का या जो हमारे उसमें तो वो कहते हैं कि निकाह का ताल्लुक जो है वो प्योबर्टी से है वो निकाह का जो ताल्लुक है वो एज से नहीं है वो इस बार कहते हैं कि इस एरिया में रहने वाली बच्चियां जो 9 या 10 ईयर की प्योबर्टी सी का वो कर लेती हैं वो फिर इसको इस डायमेंशन में ले जाए तो फिर वो अगेंस्ट इस्लाम हो जाता है बट इट्स अ लेजिस्लेशन और सर लॉ बनाने वाले मेकर ने सर ये देखिए ना कितनी बना दिया बहुत अच्छा लगा है लेकिन कैसे प्रोसेस से गुजारा है जहाँ हर आदमी जो है उसको अप्रोच नहीं कर सकता वो उसके बाद चेयरमैन सारा दिन इधर ही रहेगा सर वही वो कोर्ट में रहेगा So we have a slight look on this. Section 4 speaks about the bridegroom if he marries a child under 15 years of age, then he is liable to some penal consequences. In the same way, a person who is as the nikah register who is solemnized that very marriage of a child is also under liability and has some penal consequences. That is, punishment is sentence is 6 months and the fine 50,000 rupees. And in the same way, punishment for the parent or guardian concerned, it's same punishment. And the family court shall have jurisdiction in that very under this very area. So thank you very much. If you have any some questions. सर मेरा सवाल था सर माफी बैठ जाओ सर बैठ के जवाब सर एक हस्बैंड है